हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम IAS। आपका स्वागत है इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज में वेयर वी डिस्कस वन PYQ वन डे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 एंड इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन आया था इस साल, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 10 marks and 150 words. Now remember that this question asks us about that do you think that India का जो target है 50% of its renewable energy needs, of its total energy needs to be met by renewable energy by 2030. This is the target for us to have clean energy. Now if you believe in it, then you need to justify your answer. Now remember that the first statement is an argument and also a question on your opinion. So in order to justify this argument, you must substantiate this statement with facts and data, because without facts and data the substantiation will not happen. Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objectives? Now understand that how much role does subsidies play in fossil fuels and clean energy. How much subsidy is being spent on fossil fuels, and if we shift this subsidy to clean energy, to renewable energy, how much will it help us? Now you need to explain this. The question has two parts and you need to address these two parts separately. If you understood this question, we will start just by the introduction, mentioning about the current status of renewable energy in India. Then in the body, we will divide the body into different parts. First of all, understand what we need to do is that do you think that this target is achievable? Now how much target have we achieved, or what is our current status? 44% of the total energy needs are currently being met by the renewable energy. Now is it possible that we will achieve this target? What are the challenges in achieving this target by 2030? Second, if you think that you can achieve it, justify your answer. Mention that what all steps and measures have been taken to fulfill this target. One more thing which you need to remember is that justify your answer. How will the shift of the subsidies from this to this help to achieve above objective? So subsidies on fossil fuels and clean energy, how will it help to achieve the objectives of clean energy or renewable energy? That is one I would say dimension of this question which we need to conclude with. And at the last we will provide a conclusion plus way forward, because this is a futuristic question which demands a solution from a future bureaucrat. Now if you understood this question, we will go into the content of this question, that how much and what should be right in the answer. Before that, if you are struggling with UPSC, what you need to do is you need to connect with a mentor who will help you to strategize your preparation better. At SRIRAM IAS, we provide you with those mentors who suggest you that what all changes do you need in your preparation, and if you do those changes, you will be able to get near to the cutoff and cross the cutoff and get yourself a good rank. Now you can scan this QR code for the mentorship session at SRIRAM IAS. Now let's understand that India's renewable energy, a journey to 2030, has an ambitious target of achieving 50% of the total energy requirement from renewable sources and having 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity target by 2030. What is the current status of India's renewable energy? First, our total installed capacity currently is 190 gigawatts. Till
the earliest of 2025. Now remember one more thing, that in this answer I have taken the recent most data. Despite of the fact that the question was asked in 2022, we must be aware of the current data, the present data which we will be using in our next exam. Second, we have a target, or currently we have 44% of the total power which is contributed by the total share of renewable energy into the total energy needs of India is 44%. That is the renewable energy account currently we have. India ranks 4th in terms of, at the global level, in terms of renewable energy. 250% of the growth has been achieved since 2014 till now. Now remember one more thing, that once we quote all of these facts, we must remember that we need to highlight what all steps and measures have we taken. What were those? National Solar Mission, PM Kusum, PLI scheme and Green Energy Corridors. ये वो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमने लिए हैं, तब जाके ये टारगेट्स अचीव हुए हैं. Now these targets or these parameters were achieved by these initiatives only. Understood? If you remember that by taking one objective or by taking one initiative, we are achieving something and we are quoting it, it means that we are giving arguments and substantiation both. Now this was the introduction of this question. Post introduction, what do we need to remember is what is the challenge with respect to renewable energies. First is the scale of challenge is different. In terms of solar energy, it is different. In terms of wind energy, it is different. We need to remember it because wind energy is a bit different than solar energy, and there are different challenges, whether that is supply chain challenge in solar energy, import dependence in solar energy. Similarly, we have seasonal variation in terms of wind energy. Now remember one more thing, that in order to reach 500 gigawatts of 2030 of renewable energy by 2030, India must significantly accelerate its work in terms of wind and solar power. 25 to 30 gigawatts of installation of solar power and 10 to 12 gigawatts of installation of wind energy per year is needed. However, currently we have 15 to 18 gigawatts of per year, 2 to 3 gigawatts per year. That is why we require a 4 to 5% or 4 to 5 times acceleration in terms of these two energy modes. Now, what are the common systematic challenges in overall green energy? First, remember variability and grid integration. That is, हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की जो इंटरमिटेंसी है, जो सोलर एनर्जी हमें दिन में मिलती है और कभी कभी रात को हमें विंड एनर्जी ज़्यादा मिल सकती है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें ग्रिड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और ग्रिड बैलेंसिंग कॉस्ट करने पड़ेंगे, रिस्क को कर्टेल करना पड़ेगा. इनएडिक्वेट एनर्जी स्टोरेज, हमारे पास एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है. इंडिया को रिक्वायरमेंट है 40 से 50 गीगावाट्स की, जो कि अभी हमारे पास नहीं है. और पंप्ड स्टोरेज बाय 2030. रिन्यूएबल पोटेंशियल की बात करें तो ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स है, मतलब हम राजस्थान में अगर विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो उसको कहाँ से लेके आएंगे और उसको दिल्ली या तमिलनाडु कैसे पहुँचाएंगे. ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर is a problem. That is to transfer this energy from its origin to the destination. There is transmission loss. Auction design issues are also there. That is, जब हम किसी भी ग्रिड को ऑक्शन करते हैं, चाहे वो BSES है या फिर वो रिलायंस पावर है या कोई और है, जब हम डिस्कॉम्स को ये पावर देते हैं उस टाइम पे ऑक्शन किया जाता है. उस ऑक्शनिंग में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर हेजिटेट करता है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से. Financial sector stress is there, weak discoms, balance sheets, because जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको ये फेस करना पड़ता है कि लोग बिल नहीं भर रहे हैं काफ़ी टाइम तक. लोग जो है वो हुक्स डालते हैं, लोग पावर चोरी कर लेते हैं और वो मीटर में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से डिस्कॉम्स जो है वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं और उनका लॉस हो जाता है, विच लीड्स टू व्हाट, ओवरऑल आई वुड से डिसइंसेंटिवाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी सेक्टर. अंडरस्टूड. सोलर एनर्जी में स्पेसिफिक कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास, जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस. 70 to 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. दैट इज अ प्रॉब्लम. कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ मोर कस्टम ड्यूटी 40% ऑफ मॉड्यूल्स, 25% ऑन सेल्स
प्रोटेक्टिव, बट दिस रेजेज द कॉस्ट, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी इज रेज्ड, एंड इसीलिए प्राइवेट सेक्टर यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रूफ टॉप सोलर गैप, इवन आफ्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, लैंड हमेशा कम ही होता है, लैंड इज फाइनाइट इन इट्स नेचर, कितना ही सरकमफ्रेंस है, तो हमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है। और उसके लिए तो अगर आप देखें हमारी गवर्नमेंट अच्छा खासा सूर्य घर बिजली योजना के अंदर और इनिशिएटिव लिया हुआ था, स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना, और उसी पे यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्यों आया था? अगेन मीन्स में 2022 में आया, 25 में प्रीलिम्स में आया, 2025 में प्रीलिम्स में आया। नाउ ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है समझना पीवाईक्यूज़ को, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रीलिम्स और मीन्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स और मीन्स के एमसीक्यूज़ को आपस में रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंड स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला, शार्प स्लो डाउन पोस्ट 2017, ट्रांजिशन टू ऑक्शन मॉडल डिसरप्टेड द मोमेंट, अंडर एक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे हम विंड एनर्जी को उतना ज़्यादा टैप नहीं कर पा रहे हैं। ऑफशोर विंड, टैपिंग ऑफ ऑफशोर विंड, उसको भी नहीं टैप कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है। दिस रिमेन्स लार्जली अंडर डेवलप्ड डिस्पाइट ऑफ द पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। विंड एनर्जी में द चैलेंजेस कि हम इंस्टॉलेशन में वीक हैं। सोलर एनर्जी में चैलेंजेस आर दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द कस्टम्स which are disincentivizing, and we are dependent on China's imports and other issues. However, subsidy imbalance है। अब ये दूसरा पार्ट आ गया क्वेश्चन का। सब्सिडी इम्बैलेंस की अगर बात करें तो इंडिया स्पेंड्स 7 to 9 times more on fossil fuel subsidy than to on clean energy subsidy according to CEEW। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन सब्सिडीज़ को फॉसिल फ्यूल से हटा के सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी में डालें तो कैसे डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होगा। हायर रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज विल रिड्यूस द रिस्क। कौन सा रिस्क? जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। इट improves the project viability, crowd in private and foreign capital. It accelerates storage and grid. Targeted subsidies for battery storage, pumped hydro and green hydrogen solve the intermittency challenges। मतलब जो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ, और ये कैसे होगा? जब हम सब्सिडाइज करेंगे इसको तभी तो होगा ये। दिस विल बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर हम एक स्कीम की बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें सोलर सेक्टर में, अगर आप उस चीज़ के ऊपर सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स, सोलर प्लेट्स की प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी देते हो, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब उसका शेयर बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ एनर्जी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी एंड वी कैन फाइनली अचीव द टारगेट बाय 2030। ठीक है। सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रूफ टॉप्स, और जो आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड्स या सोलर ग्रिड्स, कि अगर आपने घर पे अपने सोलर पावर प्लांट लगाया अपनी लैंड पे, तो आप उसका जो एक्सेस पावर आपको ज़रूरत नहीं है वो आप वापस ग्रिड पे बेच सकते हो। दैट इज़ वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव वी हैव। ऑप्टिमाइज द रिसोर्स रिच स्टेट्स एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स। ओवरऑल असेसमेंट हमें ये बताती है दैट जो हमारा कैपेसिटी टारगेट है दैट इज 500 गीगावाट्स, और दिस इज टेक्निकली अचीवेबल। However, energy requirement, that is the 50%, is more challenging. It depends on storage, grid flexibility and electricians or electrification of entire country. The realistic outcome will be achieved only because of the accelerated reforms. India will come closer to the target. Thereby, the full achievement by 2030 requires extraordinary policy coordination with politics, subsidy, manufacturing, storage, investment and center state coordination. All of this must be achieved, all of this must be in place and in one straight line on one particular goal, that is achieving the renewable energy. अगर ऐसा हो जाए, अगर इन सब यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, तब जाके हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। अंडरस्टूड? सो देयरबाय हमें कंक्लूजन में क्या लिखना होगा? हमें कंक्लूजन में ये लिखना होगा दैट हम इस एम्बिशन को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में। तो कैसे करेंगे? इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन इज वेल अंडरवे, हाउएवर अचीविंग 50% ऑफ द टारगेट नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030
demands faster capacity addition, robust storage, stronger grids and healthier power sector finances. So how should we do this? A gradual decisive shift of subsidies is needed from fossil fuels to clean energy. This will correct the market distortions and mobilize investment also. The price is that with sustained commitment, India can convert its climate ambitions into durable growth. Understood? चलो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर था। हमने इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी समझ लिया। आपको अगर और कोई प्रॉब्लम आती है आंसर समझने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स स्टार्टिंग में दिए हुए हैं और मेंटरशिप के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको प्रीलिम्स में कोई इशू आ रहा है तो प्रीलिम्स के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। I wish you all the best and thank you for being here. Jai Hind.